हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं राइटिंग। राइटिंग सेक्शन सबसे अहम होता है किसी भी एक्सरसाइज में। राइटिंग का जो सेक्शन होता है वो इसीलिए अहम होता है कि इसमें हम सबसे जो मुश्किल मरहला होता है वो ये होता है कि हमने अंग्रेज़ी कितनी सीखी, हमने कितनी अंग्रेज़ी सीखी और क्या हम ठीक तरीके से अंग्रेज़ी को लिख सकते हैं या हम ठीक तरीके से अंग्रेज़ी को नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ठीक तरीके से अंग्रेज़ी को लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई है तो फिर इस लेसन को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इनने क्या लिखा है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल पर एक पैराग्राफ लिखो यूजिंग टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। मेक श्योर to use the correct joining words such as and, but, and because to join sentences within a paragraph. Read the following paragraph for help. इसमें ये बताया है कि सपोर्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वो इसका भी इस्तेमाल करना। एंड हो गया, बट हो गया, और इस तरह यहाँ पर उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है ताकि हमें इससे मदद मिल सके और हम इसकी मदद से एक पैराग्राफ को लिखने में हमें मदद हो। नेचर इज़ अ ब्लेसिंग and a gift from Allah for us. Nature is made of everything around us: flowers, trees, insects, the sun, the moon, hills, rivers, etc. are part of nature because they help us a lot in our daily lives. They help us breathe and get food, water, etc. Animals, insects, and birds also get food and shelter from nature. Nature is very important for us in everyday life. This was a short paragraph. इसमें सब कुछ बताया है। अब हमारा काम क्या है? हमने अब आगे लिखना है इसी तरह का एक पैराग्राफ, लेकिन इन्होंने हमें दिया है सेविंग अर्थ। क्या दिया है? सेविंग अर्थ। ये इन्होंने हमें टॉपिक दिया है सेविंग अर्थ। अब सेविंग अर्थ पर हमने एक पैराग्राफ लिखना है, लेकिन कैसी पैराग्राफ हमने सेविंग अर्थ पर लिखना है? पैराग्राफ को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ये लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेविंग अर्थ, तो क्वेश्चंस हम बनाते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो हमारे लिए फिर लिखना आसान होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि व्हाट इज़ अर्थ, कि अर्थ हमारे लिए क्या है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे अर्थ के बारे में 2-3 सेंटेंसेस लिखेंगे कि अर्थ क्या है। व्हाट is the earth has given us. अर्थ ने हमें दिया क्या है, यानी अर्थ ने हमें क्या दिया है, इसके बारे में हम कुछ लिखेंगे कि अर्थ ने हमें पानी दिया है, हवा दी है, चाँद तारे दिए हैं, ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें अर्थ ने हमें प्रोवाइड की है। ये हम लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि वाई टू प्रोटेक्ट द अर्थ, कि अर्थ को प्रोटेक्ट क्यों करना है। वाई टू प्रोटेक्ट द अर्थ। हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस है। अगर इन 3 क्वेश्चंस का हम आंसर लिखते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है कि एक पैराग्राफ को किस तरह लिखना होता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह सेंटेंसेस को बनाते हैं
और उन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं और इससे हमें एक अच्छा खासा पैराग्राफ हमें मिलता है। और देखते हैं कि किस तरह हम इसको लिखते हैं। तो केयरफुली इसको सुनो भी और इस तरह फॉलो करो। अर्थ इज़ आवर होम and it is our duty to protect it. Earth is the only element in the entire universe where life is possible. Earth has given us water, air, sun, moon, rivers, oceans, and green forests. The earth has given us everything. We should protect the earth.